Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to discuss a very important topic of central bank. That is how central bank controls the money supply. Okay, controller of money supply and credit. Okay, so we are going to discuss for that. First of all, I'm going to use the whiteboard, and hopefully you understand it very well because it's a very important topic and you cannot miss it. ये इस तरह का क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज और आपका जो है लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर किसी भी तरह से ये पूछा जा सकता है ओके सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से हर टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करें ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल बैंक क्या है आपका कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ओके कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई भी कर सकते हैं ओके हियर यू कैन राइट मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही है कंट्रोलर ऑफ money supply and credit. The question can be asked like this, that is the monetary policy of RBI. Okay, तो मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, that is monetary policy. Okay, so here you can do what, that is how the central bank controls the money supply in two ways. दो पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू मनी सप्लाई आपका या क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है मनी सप्लाई. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ओके, द फर्स्ट वन इज, एक है आपका क्वांटिटेटिव राइट measures and the next one is qualitative. Okay, so first we are going to start with the quantitative में पहला क्या आ जाएगा आपका, I'm going to change it here. First is the bank rate. इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे और यही आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस राइट. Second is repo rate. These are the names of the quantitative measures. Okay, so it can be asked also like this. Then reverse repo rate. मैं सबका डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स ओके और विद दीज टूल्स. देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट operations, and fifth is legal reserve requirement. आप इस तरह फ्लो चार्ट भी बना के आंसर कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द हियर, दैट इज क्वालिटेटिव. आपके कौन से आते हैं मेजर्स? फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, okay, second is moral suasion, and third is selective credit control. Okay, so these are the 8 total आपके 8 measures हैं through which the central bank controls the money supply and credit. Now first of all we need to know this point. एक मैं आपको point बताती चलूं, that is first of all you all know very well that is when money supply, जब मनी सप्लाई नहीं कि लोगों के पास पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होता है, पब्लिक के पास जो पैसा है ओके दैट इज द मनी सप्लाई. व्हेन मनी सप्लाई विद द पब्लिक इज इंक्रीज्ड ओके देन व्हाट हैपन, पब्लिक क्या करती है, डिमांड ज्यादा करना शुरू करती है, दैट इज aggregate demand increases okay and with the and as the aggregate demand increases then what happens, inflation occurs. ये आपको पता होना चाहिए राइट, because of which the RBI use these instruments, quantitative and qualitative instruments to control the money supply and credit in the economy. Reason आपको पता चल गया, that is when money supply is
more in the economy, then aggregate demand increases due to which inflation occurs. Okay, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है आरबीआई को ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स का यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. गॉट द रीजन कि क्यों ये सब क्या और कैसे कंट्रोल करता है, क्या होता है बैंक रेट एंड these all these 8 points we will discuss in detail. Okay, the first one, please take the screenshot if you want. Now the first one is the bank rate. Okay, तो आपका बैंक रेट क्या होता है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर रेपो रेट एंड बैंक रेट्स. मैं ऐसे आपको समझाई दे रही हूँ, तभी आप बुक से भी आराम से रीड कर सकते हैं. ओके ओके, हियर यू हैव नाउ द रेपो रेट. ओके, रेपो रेट किस क्या होता है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. ओके, तो आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल banks to meet, that is for the short term, to meet their short term needs. Okay, मैं आपको जो लिखवा रही हूँ यही आप बस याद रखोगे, आराम से आपका पूरा आंसर आप कवर कर दोगे. ओके, एंड द ड्यूरेशन फॉर इट इज, द ड्यूरेशन इज लेस देन अ ईयर. ओके, नाउ ये आपको समझ में आ गया रेपो रेट क्या होता है? दैट इज द आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स. ओके, दैट इज ड्यूरेशन 1 ईयर तक का होना चाहिए. बैंक रेट इज ऑल्सो व्हाट? दैट इज द, इट इज अगेन द रेट. ओके, आरबीआई दैट इज आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स. सेम चीज देखो यहाँ पे आ रही है, टू मीट देयर, डिफरेंस क्या है? लॉन्ग टर्म नीड्स. ओके, यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है आपका? यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म नीड्स था, यहाँ पे क्या आ गया? लॉन्ग टर्म नीड्स. ओके, बस ये डिफरेंस है, मेक इट अ पॉइंट. ओके, आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट द लॉन्ग टर्म नीड्स and the duration is more than year. Okay, the duration is more than a year, that is 1 year. Okay, तो ड्यूरेशन का देखो डिफरेंस है, खाली आपका ड्यूरेशन लेस देन अ ईयर और यहाँ पे का ड्यूरेशन more than a year. Okay, so repo rate and bank rate is basically what? It is the rate. Okay, it is the rate of interest which is charged by RBI. So we can say here bank rate and repo rate is the rate of interest which is, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, which is charged by RBI or central bank to commercial banks. Difference is short term and long term आपको बता दिया मैंने, and duration. Okay, okay, now how central bank और RBI controls the money supply. अब देखिए क्या करेगा सेंट्रल बैंक आपका, ये क्या रेपो रेट और इसके लिए क्या करेगा? दैट इज इंक्रीजेस. Okay, so as the increase in the repo rate, the cost of borrowing increases from central bank and it forces the commercial banks to increase their lending rates, which discourage borrowers from taking loans. Okay, तो जैसे ही आपका रेपो रेट या बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल, यहाँ पे लेंडिंग रेट्स को डिस्करेज करेगा बोरोवर्स को, discourage borrowers and money supply will reduce. Got it here? आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया, डिस्करेज बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स व्हिच रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रेपो रेट एंड बैंक रेट. ओके,
सिंपल आपको याद रखना है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स. रेपो रेट क्या है, इट इज फॉर द शॉर्ट टर्म लोन्स, ओके, फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स, एंड बैंक रेट इज फॉर द long term needs. Okay, now please take the screenshot if you want to. Okay, next we are going to discuss here reverse repo rate, third one. ये सब आप बाद में बुक से पढ़ लिएगा. Reverse repo rate is the opposite of, okay, it is the opposite here, exactly the opposite of repo rate. Okay, तो repo rate आपका जो opposite इसमें आ जाएगा, that is it is the rate. Now we can write it also like this. आप इसी तरह short note में भी लिख सकते हैं. It is the rate offered by RBI to commercial banks. वो क्या था आपका जो रेपो रेट था और बैंक रेट था, दैट इज वाज चार्ज बाय द, ओके, वो चार्ज किया था. यहाँ पे क्या ऑफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द डिपॉजिट. ओके, सो रेपो रेट इज व्हाट, दैट इज रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट their surplus funds with the central bank. Okay, so reverse repo rate is what, it is the rate of interest at which commercial banks can deposit their, पहले मीनिंग कराएंगे उसके बाद बताएंगे मनी सप्लाई कैसे कम कर सकते हैं. ओके, डिपॉजिट डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स, जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है कमर्शियल बैंक के पास, वो सेंट्रल बैंक को कर सकता है विद द सेंट्रल बैंक, विद आरबीआई में लिख देती हूँ. ओके, फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. Okay, so the rate of interest at which the central bank accept deposits from the commercial bank. Okay, so अगर हम रिवर्स रेपो रेट को क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ट्रिपल आर. ओके, आर आर आर. अगर रिवर्स रेपो रेट को हमने बढ़ा दिया, यानी कि इंटरेस्ट हम और देने लगे कमर्शियल बैंक को, सो व्हाट हैपेंस हियर, इट encourages the commercial bank to deposit their funds with the central bank, and in this way the money supply is going to reduce. क्यों मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स क्या होगा, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है. Commercial banks getting more interest while depositing surplus amount with आरबीआई. तो इनका पैसा कहाँ चला गया, कमर्शियल बैंक का चला गया पैसा कहाँ पे, आरबीआई पे पास. ओके, ये पैसा चला गया आरबीआई के पास, और इसकी वजह से क्या हो गया, मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं देने के लिए फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. ओके, इन दिस वे रिवर्स रेपो रेट ऑल्सो is a tool or an instrument to reduce the money supply in the economy. I hope you understand it very well. बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. Okay, now the next point is open market operations. The fourth point, यही सब आपकी बुक में लिखा है. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन वेरी शॉर्ट. ओके, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, शॉर्ट में हम कहते हैं OMO भी कह सकते हैं, राइट ना. ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट securities. Okay, now how the central bank take this kind of, you can say, the instrument or a tool to reduce the money supply in the economy. We will just study that. That is RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities. So when it sell the securities, sale of securities, मैंने कहा ना buy and selling. So when the securities are sold out, okay, then central bank reduces
central bank reduces the reserves, okay, of commercial banks. Okay, and in this way decreases the money supply. तो मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. देन परचेज या बाइंग कह सकते हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होगा, दैट इज सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिजर्व, increases the reserves and raises the bank's ability. आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. bank's ability to give credit. अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट हाउ सेंट्रल बैंक विद द हेल्प ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंट्रोल द मनी सप्लाई. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज. जब वो सिक्योरिटीज बेचेगा सेंट्रल बैंक, ओके, आरबीआई जब सेल आउट करेगा तो क्या होगा, पैसा पब्लिक से गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और इस तरह आपका मनी सप्लाई कम हो जाएगा. पब्लिक के पास मेन हमारा मनी सप्लाई में कम करना है, राइट. देन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज क्या हो जाता है, परचेज सिक्योरिटीज में क्या हो जाएगा, परचेज जब करेगा सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक तो आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. गॉट इट. लोगों को आप वापस दे दोगे पैसा, परचेज करोगे तो पैसा उनको पे करोगे ना पब्लिक को, तो पब्लिक के पास और मनी सप्लाई आ जाएगा. ओके, सो इन दिस वे द सेंट्रल बैंक और आरबीआई with the help of open market operations credit control करता है, right. Then the fifth one is, please take the screenshot. Okay, fifth is legal reserve requirements, LRR. LRR बेसिकली क्या होता है आपका, इसमें दो चीजें हमें स्टडी करनी है. ओके, जस्ट वेट, थोड़ा अजीब सा बना दिया मैंने चार्ट इसमें. इसमें आपका दो तरह की चीज होती है, एक होता है स्टडी करना है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एंड सेकेंड है आपका स्टैट्यूटरी, जस्ट वेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है आपका, दैट इज इट रिफर्स टू द कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व. पहला क्या होता है, कोई भी आप फॉर एग्जांपल हियर वी कैन टेक द एग्जांपल, दिस इज आरबीआई, ओके, एंड दिस इज कमर्शियल बैंक्स and this is public. Okay, now suppose public ने आपका पैसा यहाँ पे जमा किया है, suppose 100. okay, 100 दिया है, then but जो से कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो पूरा का पूरा 100 रुपीज एज लोन नहीं दे सकते, दे हैव टू मेंटेन अ रिजर्व. ओके, एंड दैट रिजर्व हैज टू बी केप्ट with itself also and with the RBI. For example, commercial banks को रिजर्व रखना है अपने पास 10% इसका, एंड यहाँ पे 20% रखना है आरबीआई के पास. ओके, सो इट मीन्स आउट ऑफ 100, 30% is going to be kept up with the as a reserve with RBI, and आपका आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के साथ रहेगा. ठीक है, रेस्ट इज 70% जो आपका लेफ्ट है वो आपको दे दिया जाएगा एज लोन्स. ओके, तो जो रिजर्व रखा जाता है इसे हम कहते हैं आपका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. फाइन, आपको समझ में आ गया. ठीक है, तो जो भी रिजर्व ये जो कमर्शियल बैंक रखता है, ओके, दैट इज नोन एज आपका स्टैट्यूटरी आता है लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज सेल्फ. ओके, एंड द रिजर्व विच इज केप्ट विद आरबीआई, this is known as the cash reserve ratio. Okay, so it refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities
टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व हम रखेंगे वो आपका आता है CRR, और S से आप सेल्फ याद रखो। ओके, याद रखने के लिए बस यही मीनिंग है इसका। एंड C इज फॉर द सेंट्रल बैंक। आई होप ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। वट एवर द अमाउंट विच इज गिवन, ओके, by the public to the commercial banks as loan, okay, then डिपॉजिट जो भी यहाँ पे आई है, ये डिपॉजिट है ना, तो जो भी पब्लिक ने डिपॉजिट किया, वट एवर द डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक टू द कमर्शियल बैंक्स, or the whole amount of deposit cannot be given as loan, okay, but it has to be kept, a certain percentage has to be kept as a reserve। तो रिजर्व क्या मेंटेन करना है, कमर्शियल बैंक को अपने पास जो रखना है, that is 10% is known as the statutory liquidity ratio, and the rest which the central bank has to kept, which the commercial bank has to kept with the RBI or the central bank, that is known as the cash reserve ratio। अब इसका क्या होगा, मनी सप्लाई कैसे हम कंट्रोल करेंगे, मनी सप्लाई हमें कैसे कंट्रोल करना है, दैट अगर हम लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 से यहाँ पे इसको 20% कर दिया, और यहाँ पे इसको 30% कर दिया, राइट। तो 100 रुपीज मेरे पास थे, डिपॉजिट के तौर पे आए हैं पब्लिक के पास से, राइट। मुझे क्या करना है यहाँ पे, कमर्शियल बैंक और RBI को कितने रिजर्व के तौर पे रखना है, दैट इज 20 + 30, ये बढ़ा दिया ना मैंने, 20 + 30 दैट इज 50। ना 50 हम परसेंट खाली लोन के तौर पे दे सकते हैं। सो मनी सप्लाई क्या हो गया आपका, रिड्यूस कर गया। Got it here? Earlier it was 70%, now it is reduced to 50% only। I hope you understand it very well, okay। Then the next is what, margin requirements। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज व्हाट, मार्जिन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप मॉर्गेज रखता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपको RBI ने लोन दिया है, राइट, डिफरेंस द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मींस आप जो चीज रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं, ओके, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, इसको बल्कि मैं मीनिंग पहले लिख देती हूँ, वो ज्यादा आपको याद रहेगा, ओके। मार्जिन रिक्वायरमेंट is the difference between the amount of loan जो हम लोन देते हैं and amount of security, okay। So that is the amount of loan and market value of the security offered by the borrower against the loan, okay, offered by the borrower against the लोन, ओके। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पे लोन दिया 100 का, ठीक है, पब्लिक ने मांगा लोन, हमने 100 रुपए का लोन दिया, बट हमने उसकी सिक्योरिटी कितनी मांगी, फॉर एग्जाम्पल 120। सिक्योरिटी पे हमने कहा आप 100 रुपए का लोन ले रहे हैं, लेकिन एक मॉर्गेज करने के लिए कोई चीज आप रखिए, खाली सिक्योरिटी 120 की। तो इससे क्या हो गया, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है आपका 20 का, दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अगर हम इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पब्लिक फिर हमसे उतना लोन नहीं देगी, इन दिस वे मनी सप्लाई रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल 100 का उसको लोन चाहिए था, हमने कहा सिक्योरिटी के तौर पे आप 150 रखिए, तो बहुत से लोग डिस्करेज कर जाएंगे, बोरोअर्स डिस्करेज एंड money supply reduces, okay। I think this is quite clear now and hope you understand it very well। Now we are going to discuss, now please take the screenshot। अब मैं आपको जो चीजें थोड़ी सी हैं वो मैं इसमें से बताती चलूँ, ये सब हम लोग रीड कर चुके हैं, आप इसको गो थ्रू दैट, ओके, इन द बुक्स, फॉलो द बुक्स।
Now we're going to discuss this. Moral suasion. This is a combination of persuasion and pressure that central bank applies on the other banks in order to get them act. It means moral क्या है? Duty है, moral suasion. The rules हैं जो आपको follow करने हैं central bank के. Okay, that is by the commercial banks. Okay, the Reserve Bank frequently announces its policies, position and urges the banks to cooperate in implementing its credit policies. यानी कि जो भी उसने credit policies बताई हैं वो आपको follow करनी है. आप मतलब यहाँ पे commercial banks. Okay. So moral suasion exercise through discussion, letters, speeches, and hints to the banks. Moral suasion can be used for both quantitative as well as qualitative credit control. Now, selective credit control यानी कुछ जगह पे आप जो है क्रेडिट कंट्रोल करेंगे कुछ सेक्टर्स के. ये कमर्शियल बैंक इस तरह भी मनी सप्लाई जो है आपका क्रेडिट कंट्रोल करता है. और कुछ जगह पे आप कुछ सेक्टर्स को इनहांस करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल द आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स. ओके, this method can be applied in both positive and negative manner. In positive manner, it means using measures to channelize credit to priority sector. The priority sector includes small scale industries. ठीक है, तो हमने उसको ज्यादा प्रमोट किया. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने उसको ज्यादा प्रमोट करा और उसको जो है सपोर्ट किया. इन नेगेटिव मैनर इट मींस यूजिंग मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट follow or to credit follow of credit to particular sectors. Okay, so in this way it controls that also. Now qualitative and quantitative you can take the screenshot और मैंने आपको बता दिया इसमें एग्जांपल्स बताए हैं. क्वांटिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से होते हैं? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन. से क्वालिटेटिव का डिफरेंस क्या है? दैट इज इंक्लूडिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉडल सुविजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. ओके, देन इसमें क्या डिफरेंस है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जनरल इन नेचर होते हैं एंड अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स, वाइल क्वालिटेटिव में भी आपने पढ़ा है स्पेसिफिक नेचर है, दे अफेक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट. ओके, quantitative controls are designed to regulate the total volume of credit, while qualitative control designed to regulate the direction of credit. Then quantitative methods are also known as the traditional methods, and qualitative methods are also known as selective methods of control. Now here you have the flow chart of this, the credit control instruments of RBI. Very 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 important, don't miss anything. Then custodian of foreign exchange reserve में क्या है? That is RBI is what, or the central bank act as the custodian of the country's stock of gold and silvers of foreign exchange. This function enables the central bank to exercise a reasonable control on foreign exchange. यानी कि foreign exchange का reserve जो होता है वो क्या है? RBI के साथ ही होते हैं, RBI ही उसको देखता है. According to regulations of foreign exchange, all foreign exchange transaction must be routed through RBI. Okay, and the main objective for such thing, it helps the bank in stabilizing the external value of currency and it helps in pursuing a coordinating policy towards the balance of payment situation of the country, right? Then the next is the difference between central bank and commercial bank. It's very easy, just go through it. The objectives and you can say the basis, the central bank and commercial banks on the basis of meaning, status, then ownership, okay, objective, issue of currency, public dealing, number of banks. All this we have done already. Okay, now in the next chapter what we will do, we will start the foreign exchange rate. Okay, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका सेकंड ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट यूनिट है. उसके बाद हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करेंगे. ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वी विल कंटिन्यू, बट बिफोर दैट मुझे एक समरी भी देनी होगी इस चैप्टर की. ओके, so hope you enjoy it, hope you like this. Okay, and keep learning, keep growing. Thank you so much.